Okay, so let's start with abdomen and the abdominal organs. The questions from this topic are being constantly asked, है ना? और इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. So let's start. The first question from here is the marked line corresponds to vertebral level. Actually, this planes passing through this vertebral levels, this question is being asked like so many places. Every exam has this type of question. So let's see once and for all that we don't have to see it again. I'll do it all in one place so that you will have a condensed thing at a single place that you can revise, and you don't have to go to the different topics to revise the same thing again. Okay, so let's do it. Actually, if we see like a transpyloric plane, from where does the transpyloric plane passes? So transpyloric plane, actually the word is suggesting pyloric means the pylorus region. So that is from the L1 region. Okay, L1, it passes at the level of the L1 vertebra. If we talk about subcostal plane, so subcostal plane passes at L3 level. Supracrystal plane, be it any exam, one question you will get from this topic. Okay, so supracrystal plane, that is L4, that is touching the iliac crest. Okay, intertubercular plane, crystal plane that touches supracrystal plane, it touches the iliac crest. That's why the name is being given that supracrystal. We'll see it in the image also in some and how. So intertubercular plane, it passes through L5 between the tubercles, and umbilicus between the level of umbilicus. The umbilicus lies at the level of L3 to L4, and the dermatome is T10. Okay? Dermatome is T10. Dermatome is also being asked for the umbilical region. Okay? So that umbilicus lies between the L3 and L4, and the dermatome is T10. Okay, dermatome, I hope all of you know. Generally, a single nerve is supplying certain parts of the skin, that is a single dermatome. Okay, so let's see here. Okay, 10th costal cartilage. So this is like see this figure they are showing us, this plane they are asking. So this is just passing at the 10th costal cartilage. 10th costal cartilage, and this 10th costal cartilage is nothing but the L3 level. This is the L3 level, and this is the subcostal plane. So this is subcostal plane. Our answer will be very easy. Actually, if we see in the Hasselbalch triangle, the lateral side is epigastric, inferior epigastric vessels, medially lateral edge of the rectus abdominis, and inferior is the inguinal ligament. In sometimes we'll see that also. Okay, so let's go ahead. Which structure of the lateral boundary of Hasselbalch triangle? That's why I told you Hasselbalch triangle just before doing this question. So Hasselbalch triangle, what I told you, in the lateral there is inferior epigastric vessels, medially there is lateral edge of the rectus abdominis muscles, and the inferior is the inguinal ligament. Inferiorly lies the inguinal ligament. So which structure forms the lateral boundary? Lateral boundary is by inferior epigastric vessels. So we have inferior epigastric vessels. Okay, next, a person had a road traffic accident and suffered from the injury to the membranous urethra. The injury is to membranous urethra. Which will be the location of collection of urine to this injury? If you attend Dr. Azam's anatomy lecture, he will tell you, like most of you have attended his LRR sessions, and like one shot he taught on YouTube also. There also he told that there will be one question. Okay, there will be one question being asked from this urine extravasation site, and let's do everything that we need to know about this topic at this same place at the same question, so that you don't have to refer it again and again. You just need to see this, because this PDF I'll be giving you in the Telegram. The link is in the first comment. Okay, so let's see, urethral injury, cause, and urine leaks to which place? So urethral, if there is urethral injury to spongy or penile urethra, if there is urethral injury to spongy or penile urethra, generally the cause for this type of injury, the injury to spongy or penile urethra, is generally caused by straddle injury. Straddle injury means simply from fall or generally kicks, from fall or kicks. The part injured will be generally a spongy or penile urethra, and the urine, if there is generally injury to this spongy or penile urethra, the urine will leak to superficial perineal space, scrotum, penis, lower abdominal wall, and next is if buccal fascia ruptures. That does not, you don't need to remember that, you simply need to remember lower abdominal wall. Okay, next, membranous urethra. If the membranous urethra is injured, there will be the main cause for membranous urethra will be pelvic fracture, and the urine will leak to deep perineal pouch. From deep perineal pouch, it can move to radius space and further to anterior abdominal wall. Remember the word anterior abdominal wall and the radius space. Okay,
If there is an injury due to severe pelvic trauma to the prostatic urethra, then the urine will lead to retropubic, or that is Regius space, retropubic space or Regius space. So let's see here what they are telling you. A person had a road traffic accident and suffered from the injury to membranous urethra. So membranous urethra, it is mainly due to the pelvic fracture. Okay, so the urine will lead to deep perineal pouch. Deep perineal pouch, superficial perineal pouch is given here, and superficial perineal pouch is generally due to a spongy, okay, a spongy urethra's injury. So peritoneal cavity, no. Anterior abdominal wall and sacrorectal fossa. So generally the answer will be anterior abdominal wall. I already told you, if there is the membranous urethra injury due to pelvic fracture or any fracture, there will be generally deep perineal pouch. The urine will lead to deep perineal pouch, and from deep perineal pouch it can move to the radius space and further to the anterior abdominal wall. So that you should keep in mind, and this is a very important slide for you. Okay, so let's see some other questions. What is the vertebral? I told you now we'll get a image question based on this, the complete image question. What is the vertebral level for the red colored line? This red colored line I already explained you above only, all the planes. So this is just touching here iliac crest, isn't it? Iliac crest. So this iliac crest is nothing but supracrystal plane, and here the option we had seen in the above question, supracrystal plane is passing through L4, touching the iliac crest. So L4, let's see option is there or not. L3, L4, so it is passing from the L4, so we should mark like L4 to L5. If there is given like two things, L3 L4 and L4 L5, then L4 L5 will be the best option. Okay, so this is iliac crest. Okay, this the lower line, this below line, this is passing here, it is nothing but intertubercular at the level of L5. The marked line corresponds to which vertebral level? The marked line corresponds to which vertebral level? Again the same question. This is nothing but umbilicus. They are marked the umbilicus between L3 and L4. Dermatome is T10, so L3 will be our option here. ठीक है, चलो. The next, the neurovascular bundle in the anterior wall of abdomen lies between. Neurovascular bundle in the anterior wall of abdomen. In the anterior wall of abdomen, the neurovascular bundle lies between. Actually, this lies between the internal oblique and transverse abdominis muscle. You will ask me how? Then let's go for how. The professor of how, isn't it? No. So if we see layers of abdominal wall from the anterior to posterior region, let's see the skin, the anterior most, then comes the superficial fascia. There will be two fascia, that is campus fascia and scarpa's fascia. Campus fascia in the fatty layer and scarpa's fascia in the membranous layer. Muscle layer will be generally external oblique, then there will be internal oblique, and then there will be transversus abdominis. View the flow: the skin, superficial fascia, then the muscular layer. This muscular layer will be again divided into external oblique muscle, internal oblique muscle, and transversus abdominis. Then comes transversalis fascia, and then comes extraperitoneal fat, and then comes the parietal peritoneum. So this is the layer, and actually they are asking us about generally the neurovascular bundle in the anterior wall, and this neurovascular bundle lies between this internal oblique and transversus abdominis. So this is neurovascular bundle, here it lies. Okay, so this will be great to go. For last time revision, you can just simply see this line: skin, fascia, three muscle, fascia, fat, and peritoneum. This much is the layers from the anterior abdominal wall. Okay, testicular artery is a branch of, if we see the branches of abdominal aorta, isn't it? The abdominal aorta, that arterial tree they have given us with BD Chaurasia, you will simply find in the branches of abdominal aorta there will be unpaired GIT. Branches of abdominal aorta, there will be unpaired branches to GIT, that is celiac, superior mesenteric artery, and inferior mesenteric artery. There will be paired lateral branches that will be to the organs like a phrenic, suprarenal. Phrenic artery means simply the artery to the kidney, and the suprarenal means adrenal, and next is renal and a phrenic. Very sorry, I'm very sorry. Not renic, it's phrenic. I'm very sorry. Phrenic simply means
that artery to the phrenic means diaphragm, related to diaphragm, the phrenic nerve that is related to diaphragm. So phrenic is diaphragm. So to the diaphragm, suprarenal means adrenal, and renal means kidney, and gonadal artery. So paired lateral artery is supplying to what? Gonadal artery. That is the branch of abdominal aorta. And the next paired posterolateral side, there will be a paired artery on the posterolateral side. It will supply to the walls, that is lumbar artery, and the terminal will be common iliac plus medial sacral artery. Common iliac plus medial sacral artery. So they are simply asking us testicular artery is a branch of, it is neither a branch of common iliac, internal iliac का तो बात ही नहीं, and external iliac भी नहीं है. So generally this is the direct branch of the abdominal aorta, that to the paired lateral branches that gives rise to generally what? Phrenic, suprarenal, renal, and the gonadal artery directly. Gonadal means simply in the males that will be testicular artery, and in the females that will be ovarian, isn't it? So identify the branch originating from the celiac trunk. So first let's see what are the branches of celiac trunk, isn't it? So in celiac trunk there will be left gastric artery, splenic artery, and common hepatic artery. Three branches will be left gastric, splenic artery, and common hepatic artery. This left gastric artery runs along the lesser curvature and gives esophageal branch. This splenic artery is tortuous in nature. If they mention the word tortuous, then you should remember that they are talking about the splenic artery. This is tortuous in nature, behind the stomach, and the branches are pancreatic branches, left gastroepiploic, short gastric, and hilar branches. And the third one is the common hepatic artery. Third one is the common hepatic artery. So they have given us this figure. Now can any one of you just pause it here and just without looking anything, you can simply tell me which is the splenic artery here? I told you tortuous in nature. Pause it and then tell me. Actually, this tortuous in nature you are seeing. Just a minute. Ah, this one. This one. Look, this is tortuous in nature. So this is nothing but a splenic artery. I have already mentioned here. This is nothing but the left gastroepiploic artery. This one is the short gastric artery. This one also the short gastric artery. This is short gastric artery is also called as vasa brevia, isn't it? Vasa brevia. Brevia term is used for short. Okay. So now here if we see, this is the celiac trunk from here, and here it is hepatic artery proper. This is left hepatic, this is right hepatic, and this is the cystic artery to the generally the gallbladder, and the next that will be the right gastric artery, and this is gastroduodenal artery to the duodenum, isn't it? This comes to duodenum, and this one is suprapancreaticoduodenal artery, and this is right gastroepiploic artery. So this image is very important. You can take a screenshot. Anyway, I am going to give you this PDF, but if you want, you can take a screenshot here and keep it, because this image they will be asking it many places, isn't it? It is very important image for the sake of this abdominal organs and abdominal parts. Okay, let's see. So this is nothing but left gastroepiploic artery. We have already learned it here also, that splenic artery gives a branch to left gastroepiploic artery, and identify, they are simply telling us to identify the artery. So that artery, this artery they are telling. So this is nothing but left gastro. The image here is a bit distorted, you can see in the actual image, and then you will come to know that this is left gastroepiploic artery only. Okay. So the blood supply of abdominal part of esophagus, in the abdominal part, the esophagus is being supplied by left gastric artery. ठीक है? Left gastric artery, and left gastric artery is generally a main branch of the celiac trunk. Okay, left gastric artery. In the neck part, the esophagus, in the neck portion, it will be supplied by inferior thyroid arteries. In the thorax region, it will be supplied by esophageal and brachial arteries, and in the abdominal part, it will be supplied by left gastric arteries. So this content also you need to remember, and this will be all for the arterial supply of the esophagus in the different parts. In the neck part, that will be inferior thyroid artery. In the thorax, esophageal and brachial artery, and bronchial, not brachial, it's bronchial artery. And in the abdominal, it will be left gastric artery. Left gastric artery, it's bronchial, it's bronchial, not brachial. Okay. Brachial region refers to somewhere here, brachial plexus we do, isn't it? Brachial artery runs here. Okay. Tail of pancreas is present in, okay, so let's see. Tail of pancreas, I think in the abdominal part, I saw you, or tail of pancreas, let me show you that image here in this part. This tail of image is coming here.
at the level of this spleen, and this splenorenal ligament, it generally contains the splenic artery and the tail of pancreas, that I have already told you in the thorax and abdomen region. Okay, so thorax region I have already told you, so that is nothing but a splenorenal ligament, isn't it? That is nothing but a renal ligament. Okay, so we have the direct answer here, splenorenal ligament. Don't need to go for many details here because you have already seen this. Vasa brevia is the name of vasa brevia. Already I told you brevia is used for short, isn't it? So that is short gastric artery. Codes of Billroth in the spleen are found in. Okay, so let's do a spleen one and for all. Let's see what all they will be asking from the spleen. Actually, if we see the spleen, there will be two parts. One is the white pulp, another one is the red pulp, and the most of the questions they make comes from these two topic only. Okay, see, white pulp has the function of immune defense. White pulp has immune defense function, whereas the red pulp has the blood filtration function. Okay, so in the white pulp the cells will be lymphocytes, T and B cells, and in the red pulp, the name itself suggests red pulp means there will be of course RBC and macrophages. If we talk about the structures in the white pulp, there will be periarteriolar lymphoid sheaths, mainly T lymphocytes, isn't it? Mainly T lymphocytes. Okay, next is lymphoid follicles. Lymphoid follicles, that is B lymphocytes. ठीक है? Okay, चलो. So this in the red pulp, in the same way, in the white pulp we have periarteriolar lymphoid sheaths, isn't it? And the lymphoid follicles. Whereas in the red pulp we will have cords of Billroth. Cords of Billroth is nothing but the meshwork of RBC, macrophages, and plasma cells. Whereas the splenic sinusoids, the red pulp again contains splenic sinusoids and cords of Billroth. So the splenic sinusoids are nothing but the special blood vessels with fenestrated, that is open walls for blood cells to pass through. ठीक है, blood cells to pass through. This is nothing but a splenic sinusoid. So अब बताओ, cords of Billroth generally meshwork of RBC, macrophages and plasma cells. It will be found in the nothing but a red pulp. ठीक है, is it easy now? Okay. अदरवाइज तो ये क्वेश्चन देख के लगता है इसमें क्या 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 कहाँ से बनाए, इसको कहाँ से पढ़े, है ना? सो दैट विल बी लाइक अ ह्यूज टेंशन. सो इट्स बेटर you should learn these things and then go to this question. What is the watershed area of inferior mesenteric artery and internal iliac artery? So first let us know what is watershed area, isn't it? Watershed area का meaning क्या होता है जी? Watershed area का meaning होता है कि regions that receive dual blood supply from the most distal branches of two large arteries. ठीक है, regions which get dual blood supply. Simply इतना याद रखो कि generally the regions which get dual blood supply, that is nothing but watershed area. अगर एक ही मसल में जनरली हाइब्रिड करके मैंने पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे क्या है, वाटर शेड एरिया इज द रीजन्स दैट रिसीव डुअल ब्लड सप्लाई फ्रॉम द मोस्ट डिस्टल ब्रांचेज ऑफ द टू लार्ज आर्टरी. अब वाटर शेड एरिया में जनरली एक ग्रिफिथ पॉइंट और एक सूडेक्स पॉइंट हमको याद रखना है. ठीक है, ग्रिफिथ्स पॉइंट एंड सूडेक्स पॉइंट. इन ग्रिफिथ्स पॉइंट जनरली इट इज बिटवीन द सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी लोकेटेड एट द स्प्लीनिक फ्लेक्चर. ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द स्प्लीनिक फ्लेक्चर. If we talk about the Sudex point is between inferior mesenteric artery and internal iliac artery near the rectosigmoid junction. So इतना अच्छे याद रखना, ग्रिफिथ्स पॉइंट और सुडेक्स पॉइंट हमको नहीं भूलना है. सो जनरली देखो तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच इज द वाटर साइड एरिया इन्फेंट्रिक IMA एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी. IMA एंड इंटरनल IMA और जनरली क्या है, SMA और IMA के बीच में ग्रिफिथ्स पॉइंट है, और सुडेक्स पॉइंट क्या है, IMA एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी. सो सुडेक्स पॉइंट विल बी आवर आंसर. ग्रिफिथ्स पॉइंट क्या है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, आप देख लो. Which of the following is not a part of pancreatic bed? Pancreatic bed के पार्ट कौन से हैं? देखो सबसे पहले समझ लेते, उसके बाद आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा. So if we talk about the pancreatic bed, there will be a splenic vein, aorta and superior mesenteric artery, left renal vessel and left kidney, left suprarenal gland and left crus of the diaphragm. These five structures will be compositely forming the pancreatic bed. अभी देखो, अगर पैनक्रियाटिक बेड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्प्लीनिक वेन, ऑर्टा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेसल, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड एंड लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक बेड करके पूछ रहे हैं. सो देखो स्प्लीनिक वेन हाँ है, ऑर्टा है, ऑर्टा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी है, लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम भी है. सो एक्सेप्ट पूछ रहा है दैट इज द राइट सुप्रारीनल ग्लैंड. एक्चुअली अगर जनरली हमने पैनक्रियाटिक बेड की बात की है, सो लेट्स फिनिश द सिमिलर टॉपिक दैट इज टॉन्सिलर बेड ऑल्सो. ये ENT में भी हमको काम लगेगा. सो द टॉन्सिलर बेड कंसिस्ट्स ऑफ बक्कोफेरिंजियल फासिया, superior constrictor muscle, palatopharyngeus, glossopharyngeus nerve, and next is
pharyngobasilar fascia, that is glossopharyngeal nerve and the pharyngobasilar fascia. So tonsillar bed has, again let's do once again, buccopharyngeal fascia, superior constrictor muscle, palatopharyngeus, glossopharyngeal nerve and the pharyngobasilar fascia. So these will be the things that will make tonsillar bed. Okay, so this is tonsillar bed. The smallest branch of celiac artery, that everybody knows, that is nothing but the left gastric artery. ऊपर में हमने पढ़ा था. शेप ऑफ द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीनिक आर्टरी याद रखना, टॉर्चुअस इन नेचर, ठीक है, टॉर्चुअस इन नेचर. शेप ऑफ लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कैसा शेप होता है, देखो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड इज जनरली सेमी ल्यूनार इन शेप, सेमी ल्यूनार यानी कि हाफ मून के जैसे. और अगर राइट एड्रिनल का पूछ लिया जाए सो दैट इज पिरामिडल इन शेप, ठीक है. सो दोनों याद रखो, लेफ्ट adrenal or suprarenal gland that is generally semilunar in shape and right adrenal is pyramidal in shape. All of the following form boundary of left suprarenal gland except, all of the following forms boundary of left suprarenal gland except, देखो लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड जो है इसके बाउंड्रीज में समझ लो, देखो जनरली क्या क्या आते हैं. एंटेरियर में क्या आता है, स्टोमक आता है, जो लेसर सेक ऑफ द स्टोमक है, दैट कम्स इन द एंटेरियर पार्ट. पेनक्रियाज, द बॉडी एंड द टेल ऑफ द पेनक्रियाज, द स्प्लीनिक आर्टरी. पोस्टेरियर पार्ट हैज psoas मेजर, लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम. मीडियल पार्ट हैज एब्डोमिनल aorta एंड राइट सुपरारिनल ग्लैंड की अगर बात करें, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड. सो व्हाई नॉट आल्सो कंप्लीट right suprarenal gland also here. So right suprarenal gland, the anterior part will be right lobe of the liver and IVC. Posterior part will be right cross of diaphragm and medial part will be IBC. ठीक है. So अगर इतना हम याद कर लें, that will be enough for us. Right cross of diaphragm, left cross of डायफ्राम क्या है, जनरली लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम फॉर्म्स द पैनक्रियाटिक बेड ऑल्सो, वो भी याद रखना है, ठीक है. और राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम इट जनरली इज द पोस्टेरियर बाउंड्री ऑफ द सुप्रारिनल ग्लैंड, इतना याद रखो. सो द आंसर विल बी, नाउ इट इज वेरी सिंपल, ग्रेटर सैक ऑफ स्टोमक फॉर्म्स. यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, लेसर सैक था वहाँ पे, सो दैट इज ग्रेटर सैक ऑफ द स्टोमक फॉर्म्स द एंटीरियर बॉर्डर. ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का वेट ऊपर ही मैंने लिख दिया था, 4 to 6 ग्राम्स, ठीक है. सो 4 ग्राम्स इज आवर आंसर. ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड्स अगर आपने फिजियोलॉजी मैंने जो करवाया था, फिजियोलॉजी किया कि नहीं आप लोगों ने, मैंने फिजियोलॉजी को बहुत कॉम्पैक्ट करके ये पूरा क्वेश्चंस जो था मैंने करवा दिया था. एंड ऑल द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड लाइक दिस ओनली आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, चैनल पे है, जाके आप लोग देख लो. वहाँ पे मैंने ब्रूनर्स ग्लैंड को बोला था कि ब्रूनर्स ग्लैंड, मैंने कहाँ पे पढ़ा था, जनरल डुओडेनम में पढ़ा था कि ब्रूनर्स ग्लैंड हैज द फंक्शन ऑफ अल्कलाइन सेक्रीशंस. जो ऊपर से जो स्टोमक से क्या हो रहा था, generally the acidic food is coming and the stomach has the environment, acidic environment, so it can withstand it. But if that acidic food will come to the duodenum, generally duodenum या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई भी पार्ट में एसिडिक फूड आया तो जनरली क्या हो जाएगा, द इंटेस्टाइन, द सरफेस म्यूकोसा विल बी डैमेज, क्योंकि वहाँ पे तो एसिडिक उसको है नहीं, ठीक है. सो जनरली क्या हो जाएगा, इसको अल्कलाइन करने के लिए देयर विल बी ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड व्हिच विल सेक्रेट अल्कलाइन सेक्रेशंस. और जब एसिड आ रहा है उसमें अगर आप अल्काली मिला दो यानी कि बेस मिला दो तो जनरली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. So that will neutralize the effect of acid. So that is generally present in the duodenum. Brunner's gland in the duodenum secretes, of course मैं तभी से बोल रहा हूँ, alkaline secretion, that is mucinous alkaline, ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन, देखो विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन में क्या क्या है, फंडस, एंटेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, स्प्लीनिक फ्लिक्चर ऑफ कॉमन एंड टेल ऑफ पैनक्रियाज. सो जनरली यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, जनरली एक्सेप्ट पूछ रहा है. सो आवर ऑप्शन विल बी डुओडेनम. Which of the following forms the posterior wall of kidney, that is quadratus lumborum. Which of the following is not in anterior relationship with left kidney, that is head of pancreas. Which of the following structure will affect or stop the ascent of kidney in fetal development, fetal development में that is nothing but the inferior mesenteric artery, ठीक है, IMA, inferior mesenteric artery, ठीक है. चलो, किडनी कॉर्टेक्स कंटेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन फिजियो में पूछा जाएगा, एनाटॉमी में पूछा जाएगा, मेडिसिन में पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाएगा. सो दिस किडनी कॉर्टेक्स कंटेंट्स, जनरली देखो किडनी के सारे पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं. देखो कॉर्टेक्स में क्या होता है और मेडुला में क्या होता है. जनरली देखो किडनी के कॉर्टेक्स में अगर हम देखें तो देयर विल बी रीनल कर्पसल्स, दैट इज ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ठीक है. ये जनरली कहाँ आएगा, कॉर्टेक्स में आएगा. पीसीटी, डीसीटी, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ऑल विल कम इन द कॉर्टेक्स पार्ट. अभी देखो लूप ऑफ हेनले, इट विल बी इन मेडुला. मोस्टली ये पूछा जाएगा कि लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है. लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में, मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट्स नाम से पता चल रहा है मेड्यूला में, एंड रीनल पिरामिड्स विल आल्सो बी इन द मेड्यूला. सो ठीक है. सो किडनी कॉर्टेक्स कंटेंट्स, जनरली कॉर्टेक्स में क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लाइक प्रोक्सिमल पीसीटी, डीसीटी, है ना. चलो ठीक है.
which is the longest part of the duodenum? Duodenum का longest part is the third part. Which of the following is dermatome of umbilicus? Dermatome of umbilicus मैंने ऊपर ही पढ़ाया था, that is nothing but T10. ठीक है, T10 मैंने ऊपर ही बताया था आपको। अभी जनरली देखो, दिस T10 dermatome supplies to appendix. appendix को कौन कौन सप्लाई करता है? T9 T10 सप्लाई करता है। stomach is supplied by generally T8 to T10 level. Testis is supplied by testis or ovary is supplied by T10 and the intestine is supplied by T9 to T11. ठीक है, सो इसलिए ये भी रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपेंडिक्स का पूछा जाता है बहुत बार। द मोस्ट कॉमन पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स, मोस्ट कॉमन पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स इज नथिंग बट रेट्रोसिकल, दैट इज 12 o'clock। पेल्विक जो है वो 4 o'clock है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजिशन है। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन पोजिशन इज रेट्रोसिकल एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन इज द पेल्विक। ठीक है, विच इज द लिस्ट कॉमन पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स? लिस्ट कॉमन इज पोस्टीरियर। मोस्ट कॉमन समझ लो, सेकंड मोस्ट कॉमन और लिस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन रेट्रोसिकल, सेकंड मोस्ट कॉमन पेल्विक एंड द लिस्ट इज नथिंग बट पोस्टीरियर। आर ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन एक्सेप्ट, देखो पोर्टल वेन के ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, सुप्रा पेनक्रियाटिकोडियोडेनल वेन एंड नेक्स्ट इज द स्प्लेनिक वेन। अब इसमें देखो कौन नहीं है? सो इन्फेरियर, दैट इज सुप्रा, मैंने बोला सुपेरियर, वही सुपेरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल वेन। ठीक है, चलो व्हिच आर द करेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द कैलर्ट्स ट्रायंगल? कैलर्ट्स ट्रायंगल ये सर्जरी में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स फिनिश इट हियर। कैलर्ट्स और हेपेटोबिलियरी ट्रायंगल, कैलर्ट्स और हेपेटोबिलियरी ट्रायंगल वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड विद द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक मैं ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसलिए कि दीज हैव डायरेक्ट लिंक्स टू सर्जरी एंड दिस एब्डोमिनल, ये जो चीज़ें हैं ये सर्जरी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सो यही चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, सो इसलिए अगर यहाँ पे भी कर लेंगे और वहाँ पे कर लेंगे डबल रिवीजन हो जाएगा। कैलर्ट्स और हेपेटोबिलियरी ट्रायंगल इज नथिंग, इसका मीडियल क्या है? जनरली देखो मीडियल बॉर्डर CHD से होगा। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। Inferolateral, that is nothing but cystic duct. Superior border is inferior surface of the liver and the contents of the Calot's triangle will be cystic artery, right hepatic artery and left lymph node of lung. ठीक है, LUND। चलो ठीक, जो पढ़ना है उसको पढ़ लो, है ना, ज़्यादा उसमें दिमाग खपाना नहीं है। ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स पास थ्रू कैलट्स ट्रायंगल एक्सेप्ट, कैलट्स ट्रायंगल से सारी चीज़ें पास होती है। सिस्टिक आर्टरी होती है, ये भी होता है, राइट हेपेटिक आर्टरी भी होता है, ये नहीं होता, पोर्टल वेन नहीं होता। स्ट्रक्चर एट द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर देयर एक्सेप्ट ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे दैट टर्मिनेशन ऑफ पोर्टल वेन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, which is the true regarding portal venous system? portal venous system में the whole system is valveless। ठीक है, which is true regarding, true ये है, ये सब इसमें valves are present at the junction of superior mesenteric artery and splenic artery नहीं, valves are present in the intrahepatic system नहीं, there are about 10 to 12 valves along the entire course नहीं, वो whole system is valveless। okay, regarding portal venous system। चीप सेल्स आर फाउंड इन व्हिच एरिया ऑफ स्टमक, मैंने करवा दिया है फिजियोलॉजी, जो मैंने GIT का फिजियोलॉजी करवाया एकदम लाइन से मैंने बताया कौन से जगह पे क्या होता है और वो क्या सेक्रेट करता है, बड़े मजे से मैंने बताया, वहाँ पे जाके देख लेना आप एक बार। सो दिस चीप सेल्स आर फाउंड इन द फंडस रीजन ऑफ द स्टोमक। एवरेज वेट ऑफ स्प्लीन इन एडल्ट, एवरेज वेट ऑफ स्प्लीन इज जनरली 7 आउंसेज, आउंसेज में दिया हुआ है। जनरली देखो 1 आउंस इज इक्वल्स टू 28.34 ग्राम होता है। ठीक है, 28.34 ग्राम, सो 7 आउंसेज इज नथिंग बट ऑलमोस्ट इतना हमको क्या हो जाएगा 198, दैट इज 200 ग्राम के लेवल में हो जाएगा। अभी स्प्लीन को जनरली देख लेते हैं, थोड़ा स्प्लीन से कुछ पूछेगा तो स्प्लीन जनरली 2.5 सेंटीमीटर थिक, 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 12.5 सेंटीमीटर क्या होता है लॉन्ग होता है। वहीं अगर लीवर की बात करें तो लीवर क्या हो जाएगा 1.5 kg का स्ट्रक्चर है, थायराइड 25 ग्राम का स्ट्रक्चर है और प्रोस्टेट कितने का 8 ग्राम का स्ट्रक्चर है। ये कॉमनली आस्क्ड वेट्स हैं कुछ, इसलिए देख लो। मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ रेक्टम इज द लोअर 1/3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टम? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। which of the following is not in posterior relationship to rectum? Seminal vesicle is not in the posterior relationship to rectum. I'm not explaining these things because we have already done the most important questions, or just here for the sake of completion we are doing. Opening of anal epithelium is made up of squamous cells. All of the following arteries supplies pancreas except inferior mesenteric artery. Which of the following is not a ventral branch of abdominal aorta? That is gonadal artery. gonadal artery हमने कहाँ पढ़ा था? ऊपर मैंने explain किया था। ठीक है, all of the following are branches of external iliac artery except external iliac artery except that is gonadal artery जो कि direct abdominal aorta से आता है। ठीक है, so all the other things that is given here is the branches of external iliac। So this much for this abdomen and abdominal organs, and we are done in a very crisp and very easy manner for this abdominal organ.
I can't make it more easy than that. And if you want anything else, you can just write it down in the comment, and I'll be very happy to answer your queries. And मैंने इंग्लिश भी थोड़ा ज़्यादा शुरू किया इस वीडियो में, है ना. मोस्ट ऑफ कुछ लोग थे, दे वर टेलिंग लाइक यू शुड यूज इंग्लिश मोर. हमको थोड़ा समझ में नहीं आता हिंदी करके, सो आई ट्राई टू यूज इंग्लिश. बताना कैसा है, ठीक है. चलो, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है. जो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का है वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप लोग जाके चैनल पे देख लेना, ठीक है. दिस मच फॉर दिस.